It was back in the year 2020 that I visited Bir, Himachal for the first time, and it was so surprising how I connected to a place in just one day and made a promise to myself that if I ever have to settle on the mountains, it has to be this place. And so in April this year, I decided to pack my bags, shift to the mountains, and ended up staying in Bir for good 2 months. And in this video, I'm going to share all the beautiful experiences I had in Bir, which can help you plan your trip as well. Let's get started. Bir Billing आए हो और पैराग्लाइडिंग ना करो, ऐसे कैसे हो सकता है? Because वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट यहाँ पे है, प्लस इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया टू डू पैराग्लाइडिंग. सो टुडे आई एम डूइंग एन इंस्ट्रक्शनल राइड, जिसका मतलब है कि मिड एयर मेरे पास कंट्रोल्स होने वाले हैं. सो ऑफ कोर्स आई हैव अ पायलट विद मी एंड आई एम डूइंग दिस विद टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग. सो लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस विद देम टर्न्स आउट टू बी. आई एम नर्वस. मैंने पैराग्लाइडिंग पहले भी की है बट विंटर्स में, एंड अभी व्यू काफ़ी डिफरेंट है, बट नॉनदलेस इट स्टिल मेक्स मी अ लिटिल नर्वस, बट आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. Let's go. Let's get ready for that, for taking that leap of faith. Confidence आ रहा है धीरे धीरे और लोगों को देखते हुए, बट ठीक है, कर लेंगे. थोड़ी नर्वसनेस है. Best of luck. थैंक यू. जैसा आपने कहा, डर के आगे जीत है. डर के आगे जीत है. अभी बस भागना है आपको बस. है ना? हाँ, और सब सही है. हाँ जी. रेडी हो? मेकिंग अप माई माइंड. बस भागना है. हाँ. मुझे डर लग रहा है यार. डर के आगे जीत है. विश्वास रखो मेरे ऊपर. सब कैसे कर लेते हैं. How is it? It is very good यार, very good. खुद से कंट्रोल किया. इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे मिले. संदीप भैया थे साथ में. Thank you. We all know about the Kalka Shimla Toy Train, but did you know there's a toy train that runs through Kangra Valley? I recommend you take a taxi to Jogindarnagar railway station, get yourself a ticket, board the train and teleport yourself to childhood as you enjoy this magnificent toy train journey. Got off at Aju, from where we're gonna go back, and this is a highly recommended experience when you visit Bir. Dishan, कैसा लगा ट्रेन राइड? बहुत बढ़िया है ना? अब हम कहाँ जा रहे हैं? माता महेश्वरी टेम्पल. Made it after a 40-minute hike. So we have made it on top of the Mata Maheshwari temple, and temple के entrance से भी ऊपर एक रास्ता जाता है जहाँ पे अभी हम हैं, and the view is just spectacular. मैंने बिल्कुल भी ऐसा भी expect नहीं किया था. The 360-degree view that you're getting here, and क्योंकि sunset होने वाला है, the sun rays that are falling over there, everything is looking really really good. Highly recommended when you come to Bir. Next is to understand the culture of this place. Now, Bir has a thriving Tibetan culture, and so you cannot miss visiting the many monasteries that this place has. I particularly remember my visit to the grandest Shimla Toy Train monastery, where I interacted with a monk, understood his lifestyle, and found myself deep into understanding their culture, which is always an experience like no other. Place is also known for its golden sunsets, and from this footage you can tell why. Here is a list of places from where you can witness incredible sunsets in Bir, and if time allows, you can even opt to do paragliding at the time of sunset, which will in itself be such a beautiful experience. I'm the best thing that has ever happened to you. Here's your time to shine, now show me what you can do. What a sunset. Bir sunsets are truly golden. Another one-day experience that you can have near Bir is to come to Barot Valley. तो हम अभी यहीं पे आए हैं, and no doubt the place is very beautiful. Right here is a river flowing. Opposite हमारे एक डैम है, यहाँ पे एक मार्केट है, बहुत सारे टेंट्स हैं, तो कैंपिंग के लिए जगह बहुत अच्छी है. बट आई फील लाइक मेरे लिए हाईलाइट थी यहाँ तक की जर्नी. जो बीर से यहाँ तक की जर्नी थी, द लैंडस्केप्स वर सो नाइस. सरियल स्टेप फार्मिंग थी रास्ते में, बहुत ही सुंदर रास्ता था. सो आई फील लाइक एक दिन
रोड ट्रिप पे निकलना है, व्यूज़ चाहिए, थोड़े डिफरेंट व्यूज़ चाहिए, तो बारोट वैली आप डेफिनेटली आ सकते हो. एंड इवन इफ यू वांट टू स्टे हियर, देयर आर सो मेनी टेंट्स एंड यू कैन जस्ट स्टे एंड जस्ट टेक अ स्ट्रोल लाइक वी आर डूइंग. फॉर एग्जाम्पल अभी हम बस डैम के ऑपोजिट वाले रोड पे रैंडमली एक जगह पे बैठे हैं एंड द व्यू इज़ सो नाइस. इट जस्ट फील सो गुड टू सिंपली बी हियर एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ ऑल प्लेसेस इन हिमाचल. I have a great recommendation for you when you're coming to Bir, and this place is far away from the tourist radar yet so beautiful that I had to mention it. तो अगर आप बीर आए हो एंड क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जनरली क्राउड आता है, एंड इफ यू आर सीकिंग कंप्लीट पीस, सॉलिट्यूड, दिस इज द बेस्ट प्लेस दैट यू कैन कम टू. इस जगह का नाम है कैंप 360. इट्स अबाउट 1 hour अवे फ्रॉम बीर. तो आप एक टैक्सी राइड से यहाँ पे आ सकते हो एंड उसके बाद एक 3.5 किलोमीटर की हाइक है. सो यू कैन ईदर जस्ट वॉक अप टू दिस प्लेस या फिर जीप भी ले सकते हो और ऑफ रोडिंग करके आ सकते हो. हम लोग ने जीप लिया था एंड ऑफ रोडिंग करके हम आए थे. एंड यू कैन इमेजिन when you have to hike for a few kilometers to reach a place, how beautiful it must be. As the name suggests, यहाँ पे एक 360 degree view मिलता है अपने धौलाधार ranges, and एक साइड पे आप देख रहे हो step farming, एक साइड पे snow-capped mountains. The sunset here was gorgeous. In fact, जहाँ आप यहाँ रुकोगे वो भी इतना thoughtfully designed है, इतना thoughtfully made है. This property is run by a local couple जो यहाँ पे वो लोग भी यहीं पे रहते हैं. And रोशन भैया is a carpenter himself. तो उन्होंने इसको बहुत ही thoughtfully बनाया है एंड बहुत challenges रहे होंगे I'm sure इस यहाँ तक एक मटेरियल को लाने में. राइट बिहाइंड मी वहाँ पे है 360 डिग्री व्यू जहाँ से पूरा आपको व्यू मिलता है. यहाँ पे एक और छोटा सा केबिन है एंड ऑनेस्टली कल से मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ हाउ ड्रीमी दिस इज, स्पेशली सनसेट के टाइम पे. यहीं से सनसेट का व्यू आप एंजॉय कर सकते हो. प्लस there's such a welcoming vibe to this place. There are such nice hosts. घर का आपको खाना मिलेगा. तो अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस करना है बीर के पास, this is a highly recommended one. So this is the best experience that you can have over here. Just lie down and get that view. Look at that view. Next on the list is my personal favorite experience, and that is to go on a random waterfall hike or a hike in general, and Bir has a scope for a lot of it, like Rajgunda, Hanumangarh, Palachak, and so many waterfalls like Bangoru Waterfall, Chobu Waterfall, Gunehar Waterfall. Some touristy, some offbeat. You can always ask the locals for offbeat experiences, and I particularly remember getting lost in the jungle while chasing a mini waterfall, but once we reached the waterfall, it was all to ourselves and it was one of the most beautiful experiences I ended up having there. Coming from a city, I sometimes do miss the option to go to various cafes, and I have to say Bir has such a nice cafe culture where you'll find almost all kinds of cuisine, be it Tibetan local food or even Western, continental, Italian, all kinds of cuisines you'll find here. And here's a list of cafes that you absolutely must try when you are here. Another experience that I highly recommend is to take a day trip to Palampur. First, visit Andretta Pottery Studio, India's oldest pottery studio, and try your hands on pottery, and trust me, it was one of the most therapeutic experiences I had. And after that, you can visit the Wah Tea Estate, take a tour of the tea gardens, the tea factory, and just generally embrace the amazing views that surround you there. Finally, if you're seeking some me time, peace, as well as a community to live around, plan a visit to Deer Park Institute and learn about the various courses it offers. You'd be surprised to see the happy aura of that place that will not want you to get up from there. I hope this list was helpful for you to plan your beach trip, and if it was, do not forget to hit that like button, subscribe to my channel, and I will see you in the next one. Bye.